Okay. So let's start. तो आज जैसे CMS इन्फो सिस्टम से बात करनी है, तो आई थिंक जैसा सोचा हुआ है, वी शुड स्टार्ट विद द जर्नी सो फार. तो जितना मैंने पढ़ा है या जितना मैंने देखा है, उससे यही समझ में आया कि 2009 के आसपास शायद राजीव कौल ने इन पार्टनरशिप विद ब्लैकस्टोन ग्रुप इसको एक्वायर किया था. At that point of time शायद 7,000 ATMs या कुछ ऐसे कुछ थे, and they were into many other services where they were outsourcing ये वो. So they were competing with Wipro and other IT companies. Now after this acquisition, they kind of consolidated and thought of keeping it less is more policy. CMS पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना, कैश मैनेजमेंट सिस्टम्स पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना, बिकॉज अदर आईटी सर्विसेज में कंपटीशन ज्यादा था, नीश एरिया नहीं था, ब्लू ओशन वाला कोई चीज नहीं थी, इसमें लग रहा था उनको. सो दे फोकस्ड ऑन ATM, सॉरी, कैश मैनेजमेंट, एंड फ्रॉम देयर ऑन द जर्नी हैज स्टार्टेड. फिर आगे सिक्योरिटी ट्रांस को एक्वायर किया, तो कैश लॉजिस्टिक्स में एंटर किया. उसके बाद भी अलग अलग प्लेस को एक्वायर करते करते, मर्जर्स एक्विजिशन करते करते, कभी IoT बेस्ड रिमोट मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कभी अलग अलग चीजें कर रहे हैं. तो दे हैव गॉन ऑन. आज की तारीख में 70,000 कैश में ये ATMs को मैनेज कर, एंड क्लाइंटाइल तो बहुत अच्छा है. बट एक स्टेडी चॉइस मेरे ख्याल से उन्होंने ये की कि, एंड आई शुड अप्रिशिएट ब्लैकस्टोन ऑल्सो, कि उन्होंने एक नॉन लिस्टेड कंपनी में इन्वेस्ट करना सोचा तब के समय में, एंड नॉन लिस्टेड कंपनी थी, अब जाके लिस्ट हुई है 2021 दिसंबर में. करेक्ट. तो आई थिंक इट्स अ इंटरेस्टिंग स्टोरी. राजीव कौल एज he has continued since then. He has majority shareholding, and he has been the chief CMD. It's an interesting story. He still continues to be. और उनके जो मार्केट आउटलुक पे जो स्पीचेस हैं या जो थॉट प्रोसेस है, वो भी मैंने थोड़ा स्टडी करने की कोशिश की. एंड वट एवर आई अंडरस्टूड, विजन तो है, एग्जीक्यूशन भी दिखाई दे रहा है. इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क लेआउट किया हुआ है, एंड कहीं ना कहीं उसको डिसिप्लिन के साथ मैनेज किया जा रहा है. नंबर ऑफ एरर्स जिसको बोलते हैं वो बहुत कम है, एंड जिस बिजनेस में ये है वहाँ ट्रस्ट बनाना बहुत मुश्किल होता है. तो आई गेस इट्स गुड. ओवर टू यू. करेक्ट. आई थिंक मैं कहीं तो आई थिंक एक हाँ, मेरे को प्रोस्पेक्टस में उसके पुराने प्रमोटर के नाम मिले, सम ग्रोवर फैमिली रैन इट. It used to be CMC का competitor. I mean, computer maintenance service center, what are computer maintenance contracts, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटिटी था, जो TCS, which is nothing but TCS right now. तब ये ग्रोवर फैमिली ने और कुछ पार्टनर के साथ में चालू किया था. they called it computer maintenance services. And I think उनके पास बहुत सारे बिजनेसेस थे till 2009-10 जो भी. That's where Rajiv Kohl came in, and Rajiv Kohl ने वो acquire किया. Rajiv Kohl का प्रोफाइल आई थिंक मैनेजमेंट में हम जाएंगे. It is very interesting. But yeah, I think overall cash management, cash logistics, उनका is their bread and butter. Is their bread and butter and is the soul of the company. But I think ATM management में recently बहुत अच्छा growth की है. So execution, so as you said, execution is proved. It is not just on paper, any plan. It is a proven execution record of last 13-14 years. And most importantly, management team has stuck together. वो पंकज खंडेलवाल और ये सब. हाँ. I think backward story अच्छा है. It looks good. It is pretty good story to look at. This Blackstone and then Baring Equity. These Blackstone, I think these are all private equities. So they usually acquire companies pre-IPO.
4 years, 5 years pre-IPO Agreed. and then list them. I think, but till the time before Baring came in, Blackstone was also there and Grover का भी कुछ holding था शायद. I don't think it was significant, but they were there. So I think that gives another point about management also. They have been through with multiple investor cycles. Yeah. Blackstone, Baring Equity, now with the stock market. So बहुत mature है that way. Yeah. So moving on, I think let's discuss market. कि cash management का market कैसा है? What are the key points which we are looking for? Sure. What do you say about the market? I think India का market बहुत growing है. Number of ATMs पर, I think बहुत सारे factors you can analyze. First is the economic growth. जैसे economic growth बढ़ेगा, GDP बढ़ेगा, cash circulation has to grow a little bit. May not be too much, but may not be secular linear growth, but there will be growth for sure. And our ATM penetration is very less. I think our average ATM is what, 15 or so per lakh people. But global average is like 40 plus. So yeah. And ATM also, I think, sort of goes through cycle of up and down based on banking cycle. So ATMs haven't grown much in last 5-6 years or so. So yeah, I think market is pretty big. It is growing, but I think it's a very governed market. So a lot of places, I mean, at least in India, RBI has a lot of regulation rules where now you have to have a minimum fleet size of 300 vehicles. Then कुछ तो net worth का requirement है ना, 100 करोड़ या 300 करोड़ कुछ तो net worth का requirement है. And even with, I think that's just the government thing. Even our Home Ministry issued some guideline for cash transportation or something like that. So yeah, RBI का minimum net worth is 100 crore and minimum fleet of 300 with GPS, CCTV, and all of it. Those two custodians, to armed license security. So yeah, it's a well-governed market, and otherwise also, I mean, it is going to be a market not easy to enter, right? Because banks won't entertain, or there is no incentive for bank to entertain a new vendor unless and until you come up with a very good technology, which is giving, I mean, unless and until there is a geo moment, right, of technological change and cash-rich investor coming into market, into the segment, it is not going to be easy. And also at the moment, market is into consolidation mode in India, at least. So smaller players sector is in consolidation mode. I have 2-3 points to add here. So what I saw is there's one point which is काफी अच्छा ऐड किया है कि कंसोलिडेशन मोड चल जरूर रहा है, तो करेंसी इन सर्कुलेशन जो एक रेशियो रहता है, तो एब्सोल्यूट लेवल पे करेंसी इन सर्कुलेशन जो है वो बढ़ रहा है 10% पर एनम के आसपास, बिकॉज इट इज इन मतलब वो शुरुआत से वैसा ही बढ़ता जाता है विद जीडीपी. It is still growing. Currency in circulation in absolute terms. Yes. But currency in circulation as a ratio of GDP has had a slight decline. Correct. So it is ultimately due to digital penetration and other alternative modes on payment. That is a reality. Again, 2000 rupees note banning, वो सब सारे फैक्टर्स उसमें कहीं ना कहीं पिच इन करेंगे. So I understand that, but there is one point which was in a way management ने भी highlight किया, and which I think we can agree to, कि जो रिटेल काउंटर है या एक आरसीएम नाम से एक टर्म है, where they are saying कि रिटेल कैश मॉनिटरिंग जो है या एक काउंटर जो है उस पे जितना कलेक्शन हो रहा है वो बढ़ गया है.
ऑल्दो वी आर सेइंग कि डिजिटल पेमेंट्स के कारण कैश का इंपॉर्टेंस कम होना चाहिए, बट कलेक्शन ऑन दीज काउंटर्स इज इंक्रीजिंग. So it's a mixed bag as far as I can say. Now there are many things we need to look into. Although we are saying कि ATMs कम हैं या कम ग्रो हो रहे हैं in the past 10 years, in the past decade or so, but मैंने कहीं चार्ट देखा था, each year number of branches added are somewhere around 4,000 to 5,000. Correct. At least consistently in the last 5 years. Correct. And that is continuing. And इनका जो मार्केट कैश के सेंस में और ग्रो हो रहा है, वो हो रहा है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेट अस से इनका एक सेक्टर बढ़ रहा है. आज तक जैसे ये बैंक्स को प्राइमरीली कर रहे थे, तो एनबीएफसी बढ़ रहे हैं. एनबीएफसी के जो कैश कलेक्शन सेंटर्स हैं उनको ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. एंड सेकेंडली व्हाट आई ऑब्जर्व वाज, ये कहीं लिखा नहीं था बट आई कुड इंटरप्रेट दिस, कि जैसे अश्नीर ग्रोवर ने एक बार एक बात बोली थी कि इंडियन लेंडिंग साइकिल या इंडियन एक लेंडिंग का जो सेक्टर है ओवरऑल, इट हैज गॉन थ्रू वेरियस चेंजेस. पहले सिर्फ पीएसयूज थे, पीएसयूज के बाद प्राइवेट बैंक आए, प्राइवेट बैंक के बाद एनबीएफसी आए, कोऑपरेटिव बैंक अलग एक्सिस्ट करते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक अलग आए, फिर डिजिटल लेंडर्स आए. तो देयर लेंडर्स के अंदर भी कम से कम 7, 8, 10 टाइप के लेंडर अब खड़े हो गए. एंड एवरी टाइम अ न्यू लेंडर हैज कम, a new space has been created. India as a market is so under credit जो दिया गया है, तो वो market expand हो ही रहा है. So as I see the future, PSU banks, private banks, and only these two kind of banks will handle their cash on their own. Okay. बाकी सारे जो हैं या तो स्टार्टअप्स हैं या फिर असेट लाइट मॉडल पे काम करते हैं. So they may not think of hiring anyone, having employees and cashiers, etc., etc. All they will do is they will use cash management के लिए पूरा outsourcing करेंगे. So from that point of view, I feel कि ये market grow होने वाला है. So it's a mixed bag. I think so I think उनके दो मेजॉरिटी रेवेन्यू स्कीम है, एक तो कैश मैनेजमेंट, राइट, और दूसरा एटीएम. तो कैश मैनेजमेंट में भी उनका ब्रेकअप है. आई थिंक लॉजिस्टिक्स अलग है, सर्विसिंग बैंक्स, एटीएम्स, retail cash collection, also intercity logistics of cash, intercity or intercity जो भी है. Yes. तो I think थोड़ा और डिटेल है इसका, how they operate, right? I think I remember reading it. So how they operate is every day you get a call or you get requests, right? Like a typical any service business, AMC wala service business, you get request, you have to pick from here, drop here. Yeah. So they have couple of own proprietary softwares, including CMS route, which has the route defined for transportation. Yeah. And one more, I forgot the name. So whatever day's order they start, they assign crew to it, a vehicle, security, and security and custodians, and I think one more person, probably driver or so. So once the crew is assigned, they go execute, update, and keep updating probably on some mobile device or something what is happening. So इसमें banks will always like to outsource it. I mean, at least ideally they should. But still even at least ये जो banks हैं, private sector banks and cooperative and also स्मॉल फाइनेंस प्लस पीएसयू, ये चार के पास में खुद का स्टाफ अच्छा खासा है, कैश मैनेजमेंट के लिए थोड़ा बहुत है. नहीं, इसमें भी मोहित अलग अलग पार्ट्स है. एक तो कैश का लॉजिस्टिक्स फुल्ली आउटसोर्स्ड है. एग्जैक्टली. लॉजिस्टिक्स पे आई एग्री, फुल्ली आउटसोर्स्ड है. रेस्ट ऑफ इट आई एम सेइंग कि एटीएम का मैनेजमेंट वगैरह ये सारी चीजें हैं, कहीं ना कहीं कुछ हिस्सा
काफी सारे लोगों के पास है। हाँ, तो आई थिंक कैश लॉजिस्टिक्स इज वेरी स्टिकी बिजनेस। या कैश लॉजिस्टिक्स इज वेरी स्टिकी बिजनेस। बाय द एंड वे, एडिशन टू कैश लॉजिस्टिक्स, आरबीआई का जो रिसेंट कंप्लायंस का एक किया आया था सर्कुलर, वेयर दे सेड कि अब आपको कैश रिप्लेनिशमेंट नहीं करनी है, आपको कैसेट बदलनी है विच इज फिल्ड विथ कैश। या तो उसके कारण इनका बिजनेस जो है वो और ग्रो कर रहा है, बिकॉज देर आर मेनी फ्यू प्लेयर्स हु कैन गिव कैसेट के साथ रिप्लेनिशमेंट एंड ऑल। एंड सेकंड, उसके ऊपर जो फीस चार्ज करनी पड़ती है, बैंक्स आर रिलक्टेंट टू इट, क्योंकि कैसेट का एक्स्ट्रा पैसा है, कैसेट मैनेज करने का, कैसेट को फिल इन करने का। बट मतलब नॉट फिल इन करने का, मतलब कैसेट को मैनेज करने का जो स्वैपिंग का जो एक है वो एडिशनल चार्ज है। सो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स से भी ये शायद और ज्यादा रेवेन्यू चार्ज कर सकते हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे आरबीआई कड़क होती जाएगी ऑन दिस कंप्लायंस। और एक रिसाइकल इज डिफरेंट और सेम? रिसाइकल खाली कैसेट लेके जानी है और वो मतलब आगे फॉरवर्ड करनी है। नहीं, एक कहीं तो रिसाइकल टर्म आई थी, मैं पढ़ा, ठीक से याद नहीं मेरे को, बट इज इट लाइक एटीएम विच कैन ऑल्सो एक्सेप्ट द कैश डिपॉजिट? वो मैंने भी नहीं पढ़ा। मेरे लिए ये चेक मोर करना पड़ेगा। विड्रॉल के सेंस में था कि हम्म एक्चुअली ये कोविड के समय आया था कि हम्म अगर जो एजेंसी कैश लॉजिस्टिक्स मैनेज कर रही है वो कैश रिप्लेनिश कर रही है, तो देयर वाज अ चांस ऑफ कि आपके कैश के थ्रू थोड़ा बहुत जो है कॉन्टैक्ट्स आएगा। तो कॉन्टैक्टलेस रिप्लेनिशमेंट जो चाहिए था, उसके कारण ये लाया गया था। बट इट वाज हम्म आल्सो फाउंड टू बी सेफ, बिकॉज हम्म। जो थेफ्ट वगैरह है या बाकी चीजें हैं, उस हिसाब से भी कैसेट वाज बेटर ऑप्शन, इसलिए इसको कंटिन्यू किया गया। या एनीवेज आई थिंक विल वो डिटेल में या जाना पड़ेगा विल उनका मूव, मोडस या विल ऑपरेटिंग में। मूव। हाँ, but hey, I think all of these are sticky, including bank, including retail, और इसमें consolidation हो ही रहा है because I think next player is, I don't remember which was the next player. I think Secure Valve is the second या largest player, I guess. सेकंड लार्जेस्ट है। हाँ, तो yeah, Brinks is in degrowth. Probably they'll shut down or something. एक या रेडियंट है, रेडियंट इसका टॉप कॉम्पिटिटर है कैश मैनेजमेंट में, इन रिटेल ओनली। ओके। हाँ, तो या आई थिंक सिक्योर वॉल और रेडियंट दो है, बट एनीवेज आई थिंक दे बट आर देन वी आर इंक्रीजिंग इन सेइंग दैट साइज। आज का जो मार्केट शेयर है वो 46%, 47% है, वो बढ़ हम्म, सकता है देख, अगर ब्रिंक्स डाउन जाएगा, अगर ब्रिंक्स डाउन जाएगा। ब्रिंक्स इज नॉट टू बिग, ब्रिंक्स से इतना कंपटीशन नहीं है, ब्रिंक्स इज ऑलरेडी हाँ, बट सबसाइडेड। स्टिल उसका जो मार्केट शेयर है, उसका पाए कुछ तो इनके पास भी आएगा। they consolidation may definitely they are going to get more and more pie. That's one या growth driver. Second is also these जैसा हम बोल रहे थे कि जैसा में वो बोलते हैं सेमी अर्बन एंड रूरल शुरू, या राइट? वहां पे या जो ब्रांच एक्सपांशन, एटीएम एक्सपांशन, दैट विल ब्रिंग इन मोर रेवेन्यू। ऑल्सो जो ये हो रहा है कि टीयर 3 टाउन्स, सेमी अर्बन में जो फ्रेंचाइज बिजनेस बढ़ रहा है, या that will be another cash collection thing. जैसा अमरावती में now you have Titan, I mean gold वाले they have to carry huge bullion and all अरे, that. टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी बढ़ गई है। यहाँ अमरावती में Correct. पिछले 3 सालों में एसबीआई ब्रांचेस हैव इंक्रीज फ्रॉम लेट्स से 2 और 3 टू 6 और 7, Hmm. ऑलमोस्ट डबल। Hmm. हाँ, I think वही urbanization is happening. I mean has happened a lot in last 5-10 years. या तो उससे सर्विस करने के लिए इवन सिटी में भी पेनिट्रेशन, इवन बैंगलोर में पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, इवन डेंसिटी बढ़ रही है। In the same area you'll get more branches. So but ये भी है, they also went through a cycle of cycle of rationalization branches में,
but yeah, I think overall cash management is going वो to be 2 साल getting पहले better. था, रैशनलाइजेशन वाला 2 साल पहले था, तब 3000 के शायद आसपास ब्रांचेस ऐड हुई थी। उसके बाद जो ब्रांचेस ऐड हो रही हैं वो कंसिस्टेंटली 4 या 5000 ब्रांचेस ऐड हो रही हैं। आई थिंक इनकी एक रिपोर्ट में मैंने ये एक इन्होंने खुद ही सीएमएस की एक कैश के ऊपर रिपोर्ट निकाली थी, आउटलुक के ऊपर, काफी इंटरेस्टिंग है। उसमें एक चीज इन्होंने ऐड की थी कि वेडिंग्स, ठीक है, एंड कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन, ये 2 बिजनेस आज भी कंसिस्टेंटली जो है वो कैश बिजनेस है। I think not only those two. There are many. हाँ, I mean, real estate हमको नजदीक से पता है, it is 50% Real estate cash. is very easily cash based business, but these are मतलब ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस और हैं जो अभी कैश ओरिएंटेड ही हैं। They are not yet converted into digital. ये हम रोज यूज करते हैं भाई, चाय पीने गए, जीपे के थ्रू पैसा दिया, इसलिए फील होता है कि डिजिटल इज गोइंग टू क्रश कैश, but it may not necessarily be the case. And one of the sentences Rajiv Kaul made, which kind of stuck with me, was कि this is your what you can say stability provide करने वाला चीज कैश, because Correct. let's say there is a AI revolution जिसमें AI ने टेक ओवर कर लिया, that's an extreme scenario, but let's say पावर ग्रिड डाउन हो जाती है कि आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, या टेलीकॉम टावर्स 2-4 डाउन हो जाते हैं, तो in any extreme scenario cash will always remain the stable currency. So that is why cash will never go away very easily. Although I have some ifs and buts over it. We will probably discuss that in risk management. But मोटा I agree with him, 50-60% I agree with him कि हाँ, जो आउटलुक उन्होंने प्रोवाइड किया है वो सही है। Correct. और I think so cash is going to be cash management, cash logistics वाला जो primary 70% business है, that is going to be there 65-70%. ATM वाला has lot of growth potential, और last उसका CAGR बहुत अच्छा है, last 5-7 साल का growth CAGR. So they are executing it very well. They have started manufacturing. थोड़ा competition भी है, but yeah, it's a very growing business. उसमें एक ये आया था पढ़ते चार्ट की डेटा की दर तो कि penetration of ATMs is very bad in eastern states, Bihar, UP. Okay. So I think they will be the growth driver to some extent of ATMs. Till now, their growth has been on 5 industrialized states: Maharashtra, Gujarat, Tamil Nadu, Karnataka, and UP. Correct. सबका वही है. ठीक है, no issues. हाँ, तो देख, बिहार has 7 per lakh, Jharkhand 10 per lakh, UP 10 per lakh. India average is 22 per lakh. और highest is Delhi 40, Tamil Nadu 35, Telangana 30. So Maharashtra is on national average. Karnataka will also be nearby same, I guess. But there are a lot of states जैसा जहाँ पे population बहुत बड़ा है. I mean, actually, if you look at that way कि population density और ATM density बहुत skewed है. I mean, west में population कम है, ATMs ज़्यादा है density. East और north में east rather population ज़्यादा है. Hello, you there? Hello. तेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था शायद. नहीं हो गया. हेलो. हाँ ठीक है, बीच में मेरे को एक मिनट कुछ आया नहीं. हाँ तो yeah, anyways, I was saying कि ATM penetration बढ़ेगा तो that market size is huge, but I think ultimately both of them are still related to cash. Yeah. Maybe ATM not so, because even if the cash utilization goes down, banks will still need to have ATM, right? So ATM is little bit less reliant on cash. I mean, little bit less. It is reliant on cash utilization or cash in circulation, but still not as much as cash logistics business. Yeah. Anyways, let's conclude on market size, opportunity. I think in terms of competitor, I think I already said Secure Wall.
and Radiant in cash, and ATM management में Secure Vault was the second largest. There are small ones, SIS, WSG. There is something AHG also, AGS also. I think we have touched on product and services also. Yeah, to some extent. Anything add or do you want to add? No, I think the ATM wala business is thoda, I mean, it's growing and all that. They are playing technology well. Rajiv Kaul ka background is in technology. But it inherently carries that technology risk with it. What technology, I mean, obviously, since it's a very government sector, so technological changes are not fast. But I mean, like a retail consumer sector, but technology is somewhere a risk of that business, and but looks like they're well positioned to grow into that business or continue growing that business. I think we missed on remote monitoring. It is part of their ATM management, or they call it managed services, right? Yeah, they call it managed services. It is part of that vertical. That is also interesting. I mean, that is also, I think he said it is growing very fast. Rajiv Kaul said it is growing very fast. So that's going to be another one, how fast it grows on. It carves out another vertical or not. I think another thing is when they, in the prospectus 2 years before or so, they had cards or something they wanted to create as a third segment. Probably personalized cards. Yes, cards and probably other services, some, but I don't think it worked out, or it I mean, it has not picked up as they would well want as it. Yeah, but I think it gives a good indication of trying out new things and shutting them down if it doesn't work, then spending a lot of capital on it, right? Yeah. So yeah. And I think as also reading globally, because of these things, key restrictions and all that, बहुत limited player है top में. ऐसा Brinks एक है, Europe में भी there are limited players. I mean, it is always going to be a oligopolistic sort of business. It is not going to be a very tough competition, but yeah, looks like that. I wonder इन्होंने कभी global expansion क्यों नहीं सोची? उसके कुछ comment पढ़ा क्या? नहीं, but मेरे को भी वो question आया. I mean, but you know, if you have excellence in processes, and technology of cash logistics, cash management pure, then you have a very good opportunity to grow across at least Southeast Asia. They should be able at least across emerging economies. Exactly. So Chinese market is typically difficult to crack, but emerging economies other than that should be very, very easy to crack. And sooner or later, that's one of the bright side upsides. That's possible. Yeah, I think ATM definitely provides a very good opportunity than the pure cash management business, logistics business. If you can just, if they figure out their ATM manufacturing, ATM software very well, right? That itself is a huge opportunity. I think we should move on to management evaluation now. Yes. So, do you want to start? You can start. Yeah, so I was kind of impressed by the team that has been, compiled or assembled. So we start with Shyamala Gopinath, who is the chairman, deputy governor of RBI, on being a director with HDFC Bank, and then is a part of Colgate, CRISIL, and many more grassroots-based women-based NGOs. So pretty impressed by her portfolio, overall exposure and experience. A person like that is definitely welcome in any team, I think. Yep. Let alone finance. And then I was even more presently surprised by Tapan Ray,
who is now CEO of Gift City. So that is the biggest one. The qualification, each of them have CFA, CA, or being a banker, being a either from Harvard or from some Ivy League. So that is definitely there. Then there is Manju Agarwal, who is the deputy manager, who has served as deputy managing director of SBI and has core banking experience. And then they have a gentleman called Mr. Jamrose, I think, if I am I think. pronouncing it Oh, rightly, yeah, who yeah, is a kind of a expert in transportation systems, especially for cash management, etc. yeah. I think he's an investor director, right? If I'm right. Yeah, he is an investor, non-executive. Uh, Hmm. then there is Sayali Karanchkar, who is co-founder of Patience. I like that. Yeah. I like that because it is sort of balancing the board with the new gen technology person, patience, pay you background. Yeah. Yeah. Hmm. Then there are two nominee directors, I think, from Baring Private Equity, Yeah. Ashish Agrawal and Jimmy Mehtani. And Yeah. then there is Rajiv Kaul. I Yeah. think you should speak on Rajiv Kaul. Yeah. I think Rajiv Kaul का अच्छा profile है, Microsoft, ex-Microsoft executive, right? And then Actis LLP investment banking probably, and then came to be an entrepreneur and stuck to it for almost now 14 years with a very good execution record. So looks like he's the leader to partner with. So I mean, feels all good. Uh, I don't like one thing about this thing is not much of their shareholding is there. ESOPs I tried getting into, I couldn't finish, but I would have liked him having some significant share, 5%, 10% in the ownership. Maybe again, these things are optimistic, hopeful things, but I mean, still shouldn't cast shadow on his execution, his performance for last 14 years. And he's compensated well, I guess 10 crore or so, somewhere I saw, or more than that. So yeah, looks like he's the guy for the job. Even the other people, I think Manjunath Rao, Parameshwar, Vijay Iyer, Anush Raghavan, Sanjay Singh, Deepak Bhagchandani, Pankaj Khandelwal, who is CFO, Rohit Kilam, Rudyal Watts, all are nearly 20 years experience, and they all have, bright associations with many corporates, whether it is Motorola, Tata Telecom, Kane India. So everyone has, a good record. IBM, Adani, TCS. Yes. Yeah. I like more Manjunath Rao ka profile. Think sort of very old guy in the business, still around. 30-35 साल का experience. बाकी faces थोड़े relatively नए हैं. I mean, not बाकी, but CTO is hired in 2020. Human resource guy is again hired recently. But again, both of them come for very, very good background. I mean, TCS, Aditya Birla Group, and GE and all that, right? So profiles are good. Core management is there. I mean, the CFO is there for long duration, right? So that is assuring, because typically CFO moving is the scariest thing. If CFO is moving, then there's numbers come in the you have to verify numbers, double verify numbers. I think they have proved themselves. They are doing what they were expected to do. Or all I am concerned about is so for me the only concern in governance or otherwise the how the team works is the culture of a company at times changes after you become a listed company. And it has been nearly only 1.5 year after they have been listed. So I want to see a year or more to check how this works out. I think culturally, not culture, but the priorities of the management
change because of the constant questioning from the market, the expectation, share price, and all that. Yeah. To some extent, that's visible in their investor day, the way they are communicating story, a little bit of exhibiting that confidence, or maybe overselling the story to some extent. So maybe I'm just trying to link them on the fly. I haven't thought about it, but yeah, I mean that culturally there should not be an issue because team has been around for a long time. They have been through. I used the wrong word. I'm also talking from the point of view of not culture, but the overall practices, the way you work. Yes, but if you think about their communication, they are focused on right things. Yeah. So should not the communication be a problem. is in the right direction, even when they are giving transcript calls, etc. So analyst calls, etc. When they are handling, the communication is right. It's not like they are hiding or not acknowledging wherever they have some limitations, etc. They are accepting it. Yeah. So like when there was the GST issue, demonetization issue, etc., they accepted that this is a difficult time and they carried on. Yeah, I think in my mind, CTO having been hired recently, 2-3 years, वो कहीं तो मेरे दिमाग में रुका हुआ है, but I think Rajiv Kaul himself is a technology guy, so that offsets it. Yeah. And that also gives another confidence about his versatility. I mean, he's very versatile, that being a technocrat, he went into banking sector, which is very banking, and not only banking, PSU banking, which is very difficult orthodox. To deal with. Difficult to deal with. I mean, हमको अभी भी if you have to go and talk to them, it is difficult. So वहाँ पे he penetrated. He got those guys to work with him on the board also to some extent, right? Including I think Shamalata or so. So I think speaks about his ability to take people along from different walks of life. Yeah. Regulation control next. RBI, any issues? I think regulation. Before we go to regulation, एक comment था मेरे पास market size पे. I think they have commissioned few studies from Frost and Sullivan or few more. The market total is estimated to go like 17% or 16.5% CAGR till 2027. Yeah. So again, these numbers can't be verified, but 10-12% is a very conservative estimate of growth, of market size growth at least. So yeah. Any comment on regulation control? I think cassette is the one thing I kind of read about RBI bringing more regulations. Soon there will be more based on whatever happens. But I could not find in much. There is no licensing, etc. So we are saying that it is a regulated market, but regulated market is only in the sense of you having the infrastructure and the network to supply services to the bank. It is not regulated in the sense that you need a license. But मोहित जो वो एक ये था, मैं पढ़ रहा था prospectus में, the 100 crore market cap, 300 vehicles, GPS, all that, right? Yeah, वो तो है. It is applicable not only to the contractor, also to subcontractor. Yeah. That much is there. No, but subcontractor has a very long implication. Usually subcontractor grows into a contractor. Not all of them, 5% of them, 1% of them. It creates a big entry barrier. It does. So, and I think regulation may RBI has operational regulations on how things should be done. Yeah. Cassettes wala is again an operational thing. RBI has overall this may not be explicit licensing, but this is implicit licensing. Minimum net worth and all that. That's there. And good or probably good thing is RBI has its eyes set on how banks are doing these things, and rightly so, because
how cash is being moved, transported, utilized. RBI should know it. RBI should have control over it. So I think 2021 there was one more regulation which came for the which has a positive negative impact. If the cash in the ATM is not available up to certain hours, right? More than 10 hours in a month, you are charged 10,000 penalty. Bank is charged penalty per ATM 10,000. It is interesting because that doesn't stop at bank. Yeah. Bank charge it back to CMS. The back-to-back arrangements are there. So regulation is good and bad both for CMS business. But have you, do you think there will be any more regulations coming in? Not like something government has a lot of focus on it and anything. Government को जो digital push के लिए करना था, government has already done it, right? I don't think, right? I mean, see, regulations are usually reactive, right? Usually, some of them can be proactive. Proactive will be more from the focus of. I think there are regulations actually on banks outsourcing. What services banks can outsource, what they cannot outsource, whom to outsource. उस पे भी RBI का regulation है which impacts CMS and similar businesses. So I think banks का starting point, RBI का starting point is banks. Then it goes further down. So if it sees an issue in the bank is not doing this correctly, spending too much money, and I think probably RBI would probably push them to outsource it to some extent because PSU's management is not very efficient or their operations are not very efficient. So it is always good for government itself to, government itself is rationalizing by merging and all that. So outsourcing them will make more sense. So yeah, I think regulation is something to watch for. I don't see any negative from it to worry about that will impact CMS business significantly. Yeah. Numbers story, performance evaluation. Yeah, I think numbers is good. Last 3 years का तो बहुत ही अच्छा है, right? Last 3 years का if you see, 17% CAGR. हाँ, or more than that, return on capital, return on equity is 20%. 20%. Last year. So that's good. Cash generation is good. 2023 cash was 400 crore cash generated. Out of, the profit is 300 crore. Operating profit is 538 crore. Cash generated is 400 crore. So very good cash generation. And cash is consistently generated. Last 5 years, 19, 20, 21, 22, 23, cash is getting generated. Yeah. Similarly, there is increase in the fixed asset borrowings. I think they borrowed this year 200 crore. Borrowing is very low. This year they borrowed 2023 year, but not significant. 200 crore, which is I don't think we have to worry about it. Yeah. So low debt stock, frankly speaking. Low debt, I think days payable. Working capital में debtor days are like 100 average. Yeah. Probably PSU का impact a little bit. Even अगर ऐसे सोचो तो 400 करोड़ आपका प्रॉफिट है और आपने सिर्फ 200 करोड़ लोन लिया हुआ है. True. लोन का तो I don't think there is much to worry. लोन का एट ऑल कोई इशू नहीं है. पॉजिटिव ये है कि 1900 करोड़ ऑलरेडी टर्नओवर पहुंच चुका है. एंड बाय द लुक्स ऑफ इट जो भी एक असेसमेंट आ रहा है या प्रोजेक्शंस है उससे 2700 करोड़ के आसपास चला जाएगा 2-3 सालों में. ये 3 साल should be conservatively correct 15% के आसपास growth से. Yeah, so looks good. 19-20% growth, 15 to 20 के बीच में on an average. अगर कंजर्वेटिव पकड़ो तो 15 पकड़ो, जो अभी सिनेरियो दिखाई दे रहा है. अब 5 साल के बाद क्या होता है नो वन नोस. 5 साल तक तो भी आई थिंक 15% इज अ रीजनेबल कॉल टू मेक कि 15% ग्रोथ होगा. एंड सेकंड पॉइंट, इसमें ये जो बिजनेस है इसमें ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत है. व्हिच मींस फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा है एंड जितना टर्नओवर बढ़ेगा उतना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा. तो
उसका एक, आई मीन दैट्स राइट फॉर कैश मैनेजमेंट बिजनेस। एटीएम में मोहित एक मॉडल उनके थोड़े अलग अलग है। एटीएम में समटाइम्स एटीएम में यू इन्वेस्ट अप फ्रंट in some cases, then Yeah. you get paid back with the annuity, right? 5 to 7 year, up to 10 years is the total ATM life, not beyond 10 years. So ATM में थोड़ा cash upfront investment जाता है, but उसमें भी model है which is based on fees or annuity or fixed number of transactions, fee per transaction or fixed fee per month, one of them. तो वो ऑपरेटिंग लीवरेज के अपोजिट भी काम कर सकता है, और मे बी आई थिंक इट विल वर्क फेवरेबली, बट and I think these people are smart enough to get a right deal. Yeah. वर्किंग कैपिटल में डेज पेएबल बहुत ही एक्सटेंड होते हुए दिख रहा था. I tried getting into it. I mean, days payable is like 700 days. Yeah. I tried getting into it. Think नहीं, वो कुछ तो एक्चुअली सब मिला के है. इट्स नॉट जस्ट, मतलब उनके जो भी एक्सपेंसेस हैं सब मिला के है. एंड टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू, एक नंबर जो मुझे थोड़ा वरी किया वाज 5% लॉसेस, जो कैश के लॉसेस होते हैं, रिकंसिलिएशन एंड एम्बेजलमेंट थेफ्ट वगैरह. 5% नहीं है ना, 5%. 5% का उसका नंबर दिया गया है. आई थिंक इट इज 5% ऑफ रेवेन्यू या ऐसा कुछ है. The cash lost in transit for 2021 was 4.47 million, यानी 5 करोड़. बाद में 23 million, 75 million, 7.5 करोड़. 2021 में 7.5 करोड़ कैश लॉस हुआ था. तो वो इट इज नॉट ओनली कैश लॉस्ट, रिकंसिलिएशन इश्यूज कि अकाउंटिंग के दौरान कुछ ऊपर नीचे हो गया, सॉफ्टवेयर में कुछ गड़बड़ हो गई. यार वो तो मैं तो कैश लॉस्ट इन ट्रांजिट की बात कर रहा हूँ बस. नहीं, तो इन्होंने आई थिंक एक एनालिस्ट रिपोर्ट में मैंने पढ़ा था कि देयर इज अ 5% का ओवरऑल लॉसेस का एक रेशियो है इनका, जो विद कैसेट एंड ऑल थोड़ा कम हो जाएगा, 4% हो जाएगा. नाउ आई थिंक दे वर टॉकिंग, अब वो 5% इज इट ऑफ रेवेन्यू या 5% ऑफ व्हाट, आई कुड नॉट गैदर. वो थोड़ा मैं बट कहीं लिखा था. तो और मैं जितना इनके ब्रेकअप देख रहा था एक्सपेंसेस के, उसमें भी व्हीकल एक्सपेंसेस एक बड़े हैं, सैलरी एक्सपेंसेस ठीक ठाक है, देन देयर वर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. उसके बाद चौथा एक जेनरिक था. तो मुझे लगा कि वो लॉसेस जो है वो जेनरिक में है. कहीं पे तो इट इज नंबर इज अराउंड 1% ऑफ द रेवेन्यू. It is going to reduce by 1% because in the future जो either कैसेट चेंज वाला या और कोई जो भी ये एफिशिएंसीज लाने वाले हैं, मॉनिटरिंग करने वाले हैं, उसके कारण 1% से रिड्यूस होगा, यानी 5% का 4% होगा. दैट इज व्हाट आई रेड. इसमें मोहित थोड़ा ये आई थिंक इट्स अ बिग पार्ट ऑफ दैट रिस्क ओवरऑल, बिकॉज देयर आर कपल ऑफ थिंग्स. वन इज कि बैंक्स चार्ज करती है विच इज अराउंड 1% ऑफ रेवेन्यू जब वो एटीएम में शॉर्टफॉल होता है एंड ऑल दैट, राइट? दैट्स वन. सेकेंड इज कैश एम्बेजलमेंट, दैट्स ऑल्सो बिग. 2021 में 7.5 करोड़ एंड ऑल, विच इज सिग्निफिकेंट नंबर. आई थिंक प्रॉब्ली इन टोटल तू जो बोल रहा है वो आ रहा है, इन टोटल तू जो बोल रहा है वो आ रहा है 5% के आसपास आ रहा होगा. एनीवे, बट दैट इज वन ऑफ द रिस्क. वो एक था, बट अदरवाइज नंबर्स वाज प्रीटी गुड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं लगी. नहीं, बैड डेट का भी मोहित नंबर अच्छा बड़ा है. 21 में 22 करोड़. ओके. बैड डेट्स इज वरिंग एक्चुअली. 21 में 22 करोड़, 2020 में 38 करोड़. FY22 में दिखा क्या कितना है? तो FY22 में हाँ, एक
20। यार तुमने 2000 करोड़ के 1500 करोड़ के बिजनेस पे 20 करोड़ का बैड डेट इज बैड नंबर। I mean 1% है ना? more than 1% for sure। नहीं 1% ही है एंड नहीं नियरली 2022 वन में वन एंड टर्नओवर हाफ परसेंट 1600 बट दैट इज एवरेज एनीवेयर यार। इतना। हाँ, कपड़े के धंधे में भी होता है। नहीं रिटेल वाला वो वाला अलग है मोहित। ये जो B2B बिजनेस है यहाँ पे तुम्हारा कस्टमर बैंक है, ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशन एक तुम्हारा कस्टमर है। नहीं तो ये आई लोग थिंक कोऑपरेटिव बैंक और ऐसे बहुत सारे बैंक को देते होंगे जो डूब जाते होंगे। स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये बैंक, वो बैंक। अभी आरबीआई ने कितने बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया है? वो जो लिक्विडेशन प्रोसेस में जाएंगे उनसे कैसे वसूलोगे? ठीक है। बट पास्ट में भी मोहित यार 57 आई मीन कंसिस्टेंट है वो एक अलग ये है। इट इज नॉट गुड साइन। आई मीन 2020 में रेवेन्यू वॉज 1000 करोड़ 38 करोड़ का बैड डेट। 2020 में रेवेन्यू कितना था? हाँ 1400 करोड़ था। 1400 करोड़ पे इट इज ऑलमोस्ट 3%, या 4%। या ठीक है। आई वो थोड़ा थिंक गड़बड़ था। दिस इज वर्थ वॉचिंग। 3% के अंदर है, 2.5% के आसपास है। एनीवेज सो दैट्स वन थिंग। बट ये ओवरऑल जो लॉसेस है या यार ये समझ नहीं रहा है। ही वाज बोस्टिंग अबाउट इफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी एंड ऑल दैट। इवन इन्वेस्टर डे में पंकज खंडेलवाल भी ही वाज बोस्टिंग अबाउट रिकंसिलिएशन, हाउ फास्ट वी डू एंड ऑल दैट। तो not 1 plus 1 is not matching equal to 2। नहीं, we are thinking of 5% in layman terms। मे बी अगर कोई और ब्रिंक या कोई और कंपनी का बेंचमार्किंग अगर हम इस पॉइंट पे कर पाए तो पता चलेगा। मे बी इट इज मोर देन 5% फॉर अदर्स। एग्री। देखना चाहिए। इट इज वन टू वर्क ऑन। तो आई गेस उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। आई थिंक या कुछ रिस्क में बैड डेट एक ये था। बैड डेट्स है, लॉसेस है। लॉसेस, बैड डेट, टेक्नोलॉजी का रिस्क एटीएम के साथ में, ऑपरेशनल चेंजेस ऑफ ऑपरेशनल एंड रेगुलेशन चेंजेस बाय आरबीआई एंड गवर्नमेंट। One दैट risk I think which no one has even talked about, मुझे एक थोड़ी सी कंसर्न दिखाई दिया कि when we were talking about market outlook and when even the management was talking about market outlook, their approach was कि नहीं, cash is not going to go anywhere। Although दैट्स द alternative रिस्क। modes of payment आ गए हैं but cash is the king। मतलब kind of, अब वो maybe he is right। I'll not say he can be wrong। That is why I initially said कि 50-60% I agree with him। But sometimes it can be a sign of denial। आई थिंक देख यूजुअल जो ओल्ड स्कूल वाले हैं दे विल नॉट एक्नॉलेज, दे विल वर्क ऑन इट। Maybe। एंड So that is one point, but what I missed in the entire story, whether it was management, whether it was the any other analyst, was the impact of CBDC। सीबीडीसी का उस पे कोई कमेंट्री नहीं है कहीं भी। और मेरा इनिशियल थॉट जो है वो ये है कि सीबीडीसी एक बार आ गया एंड इफ इट इज एज सक्सेसफुल एज let's say RBI Governor Shaktianta Das points it out to be, then cash in circulation will really go down। I don't agree. If whatever dent UPI had to do, UPI has done it. There is not. It is going to be a cycle other way around now. As UPI cost will be realized, charges will be charged every transaction, as sooner or later I sometime. agree, but I'm not talking UPI, I am talking CBDC। Because यूपीआई का any चार्ज इसलिए है क्योंकि यूपीआई को कॉस्ट लगती है, CBDC में इंटरमीडियरीज cost क्यों इन्वॉल्व नहीं है। लगे?
सीबीडीसी में सिर्फ क्लाउड की कॉस्ट लगेगी, उसके अलावा क्या कॉस्ट लगेगी? ठीक है, आई थिंक इट इज अ पॉइंट वर्थ वॉचिंग आउट फॉर. आई सी थिंक एक रेडिकल थॉट देता हूँ, हाँ, एक रेडिकल हाँ, थॉट देता हूँ हाँ, ऑन हाँ, सीबीडीसी. हम्म, लेट अस से आज की तारीख में जैसे पॉलिटिशियंस एक ये देते हैं कि 200 यूनिट बिजली फ्री, ठीक है, एंड क्या बोलते हैं वाटर फ्री, व्हाटएवर जो फ्रीबीज जो चल रहा है ट्रेंड. इन फ्यूचर लेट अस से पॉलिटिशियंस गो ऑन एंड प्रॉमिस कि बस मंथ का 30 GB डेटा फ्री. यार लोग यहाँ पे फोटो बैकअप करने को डेटा ढूंढ रहे हाँ हैं. गूगल से if you observed it, Google Pay, if you back up your photos after हाँ 150 GB, it asks you to purchase. हाँ. So I don't think, I mean, there are a lot of नहीं, uses मैं for वो वाला data. नहीं बोल रहा हूँ, मैं वो वाला नहीं बोल रहा हूँ. हाँ, Right now the challenge kind of is कि so the basic premise behind कि UPI और digital banking will not go beyond a certain limit is कि टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर का पेनिट्रेशन नहीं होने वाला है टू द लास्ट माइल, टू द लास्ट मैन. या फीचर फोन वाले लोग कैसे यूज करेंगे, ऐसे बहुत सारी चीजें. आई एम that's सेइंग true. वो ऐसा अगर अरेंज कर दिया जाए जहां गवर्नमेंट विल बियर द कॉस्ट. व्हाई? बिकॉज प्रिंटिंग मनी इटसेल्फ हैज अ कॉस्ट, मैनेजिंग करेंसी इटसेल्फ हैज अ कॉस्ट. तो जो कॉस्ट आरबीआई का बचेगा उस पैसे को गवर्नमेंट एज ए सब्सिडी देने को तैयार हो जाए कि भैया ये लो डेटा फ्री ले लो, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी कर लो, सब लोग मोबाइल बाय करो, एंड आज से आप मोबाइल में. इट्स अ रेडिकल आइडिया, आई नो इट इज नॉट गोइंग टू हैपन, या इसके होने का 1 या 2% ही चांस. Probability कम है. हम्म. तो आई एम सेइंग इट कैन हैपन. ये प्रोबेबिलिटी इज प्रोबब्ली 1%, बट इट्स अ रेडिकल आइडिया कि भैया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कनेक्टिविटी के लिए जो जो डिवाइसेस चाहिए, जो जो वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, बिकॉज इट कैन सेव मनी ऑन करेंसी प्रिंटिंग. There is an incentive to go away from cash for sure. There is an incentive for RBI. There is no incentive for consumer, or less incentive for Why consumer. not? Why not? I mean, uh, I think if you talk about it generation wise, new generation probably for them, it is no brainer. They have to be on UPI and CBDC, whatever it may be, right? Whichever is the technology which is latest, cheapest, whatever it is. That's a threat to their business. But we do have a sizable population in the areas which are remote, where banking has not reached much and all that, right? 7 ATM per lakh people in Bihar, 10 in UP, in all that is, that's a reality, ground reality. So agreed. So I am just putting it as one of the factors of risk assessment which I could not find commentary on anywhere कि CBDC का क्या होगा. I would not worry about CBDT, but in general, cash is a risk. See, UPI, you are saying, okay, let's be debated on cost of CBDC and all UPI. Yeah. UPI has been free for last 5 years, 3 years, 4 years, whatever it is. Yeah. कितना इम्पैक्ट किया कैश इन सर्कुलेशन, कैश यूटिलाइजेशन पे उसने? 20% तो किया है. 20% पेनिट्रेशन हुआ है ट्रांजैक्शन में. डेटा देखना पड़ेगा, आई डोंट नो, बट सी द कैश इन सर्कुलेशन अभी ये साल 2023 में कम है. एब्सोल्यूट लेवल इज सेम, आई एग्री, बट CIC कैश इन करेंसी इन सर्कुलेशन टू GDP रेशियो हैज गॉन टू डिक्लाइन. दैट इज द रियलिटी. दैट इज बिकॉज ऑफ डिजिटल पेमेंट. वो तो देयर आर टू फैक्टर्स टू इट कि क्वांटिटेटिव tightening हुआ है, right? Obviously digital is a big role, we will have a significant role, but there are other factors also. I think for us to think, right, we'll have to keep revisiting the cash ka relevance. Yeah, we'll have to keep revisiting it, but I am saying that this is one of the big risks जिस पे अभी तक कोई commentary नहीं है, and even management has not commented it by acknowledging that this is a risk. Management tried playing the game of fintech with the cards and all that. So
मेरे दिमाग में आया था, but I didn't make that point कि denial is not there. I'm not saying denial. I'm saying acknowledging it as a risk is a question. Correct. There are two parts to it. One is denying, which is very dangerous. There is no threat to my business. Second is going out and accepting that, okay, it is a threat now. Yeah. Okay. And I think if I am the CEO, I would not go out and acknowledge it as a threat. What he did is right, went and had a play at cards business or whatever. Didn't work. ATM work. He's focusing on ATM. And so it is a risk to watch out for, in my estimate, 5 years down the line, a revisit. कितना रिस्क, कितना क्या हुआ है कैश का, व्हाट इज हैपनिंग तो विद द इसके कैश. कुछ लीड इंडिकेटर्स रखने पड़ेंगे कि कब ये थ्रेट बन सकता है. आई एग्री. तो मे बी लेट्स सी, कोई एक लीड इंडिकेटर डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या लीड इंडिकेटर हो सकता है. CIC इज डेफिनेटली वन. CIC टू GDP इज अ गुड इंडिकेटर आई थिंक. आई थिंक इसके फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर डिफाइन करना थोड़े डिफिकल्ट और थोड़े कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज ठीक है, वी विल रिविजिट इट. कहीं ना कहीं इसको देखना पड़ेगा. ओके. एनी अदर रिस्क यू फाइंड? टेक्नोलॉजी का तो बात कर लिए. अपफ्रंट कैपेक्स ऑफ ATMs, that's a little bit of risk. What if I invested into ATM and then 5 years down the line RBI changed something, 3 years down the line something changed, मेरा तो write off करना पड़ेगा ना. So that's the risk. They are buying 80% of the parts, 86% of the total purchase from Hyosung DNS, which is Korean, I guess. Okay. So that's a big concentration. Again, have to get into detail of what they are buying and all that. With the assembly they are doing, is it still the case? That was 2021 statement, so might have changed. So, but that's something worth checking. Legal cases is another big risk. इतने सारे लीगल केसेस है, वो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस के, डायरेक्ट टैक्सेस के करोड़ों में है. आई मीन 20, 30, 40, 50 करोड़. नहीं, बट कंटिंजेंट लायबिलिटी का मैंने फिगर देखा था, इट वाज नॉट एज बिग एज वी थिंक. ये देख 2020 में देख तो अभी कितना ये है, तो कंटिंजेंट लायबिलिटी इज 116 crores. दिस इज उसका ब्रेकअप दिया है क्या? हाँ, दिया है ना. कस्टम्स है, वैट है, एक्साइज है, ये सब पुराने मैटर्स है. हाँ, फिर वही है. बट वही मैं देख थोड़ा पता नहीं, ये तो वेरी फ्रैंकली ये तो अभी इसमें से वैट के मैटर, इज इट रजिस्टर्ड इन मुंबई? और हर जगह के वैट है, हर स्टेट का वैट का इश्यूज है. केरला का सबसे ज्यादा था. अच्छा. केरला, बिहार. सो इसमें मोहित एक थोड़ा उनका एटीट्यूड पता चल रहा है कि these guys don't give up their fight. Yeah. Or maybe looking at the amounts, they had to fight. They had no other way. नहीं, दूसरा इनकी कंटिंजेंट लायबिलिटीज में जो हमने कंटिंजेंट लायबिलिटी का अमाउंट बोला 116 में से नियरली स्टैंडअलोन का है कि इसका है? नहीं, कंसोलिडेटेड का है, बट उसमें से 80 crores तो गारंटीज है. तो दे आर नॉट डिस्प्यूटेड मैटर. मतलब पर से 35 to 40 crore, 35 crore के आसपास ही टैक्सेशन वाले मैटर्स है. मैंने सेटल हुआ है कुछ ना कुछ तो. तो 35 crores के आसपास ही है, उससे ज्यादा नहीं है. तो इट्स नॉट अ बिग डील आई थिंक. मेरे को एक पेज मिला है, BR VAT पेज नंबर 128. कौन से इसमें? 2022 FY एनुअल रिपोर्ट. अमाउंट रिड्यूस हो गया क्या? हाँ, अमाउंट रिड्यूस हो गया. सेटल हुए यानी? हाँ, डेफिनेटली. ऑडिटर भी काफी रिलायबल है, PSR एंड कंपनी. हाँ, वो तो चाहिए. ठीक है, then it's not a thing to worry about. But legal cases बहुत है मोहित, and it is expected कैश के बिजनेस में रहेगी. बट मैं कुछ पढ़ रहा था बैंक्स के साथ में, सिंडिकेट बैंक, कोटक बैंक, कहीं कुछ तो हो गया. नहीं, वो इतने ज्यादा नहीं लगे. उसका लायबिलिटी तो रिकॉग्नाइज नहीं की है, कंटिंजेंट लायबिलिटी उतना दिख नहीं रहा है. सेटल हो गए होंगे शायद. मैं इसमें देख रहा था प्रोस्पेक्टस में. अपने प्रोस्पेक्टस में. बट knowing this business, it is not, you can't
You can't shy away from them. क्योंकि Yeah. एम्प्लॉय एम्बेजलमेंट करने वाला है, बैंक जिसका पैसा है वो चिल्लाएगा ही. यू हैव टू, यूनियन वाले भी इश्यूज है सेम, यूनियन के इश्यूज इधर उधर है. तो बट आई थिंक they have survived and grown, so I think this should be fine. Agreed. So overall, what do you feel? I think they will continue to grow, so it is a good bus to hop on. कैश वाला बिजनेस का रिस्क वी हैव टू कीप ऑन वॉचिंग, बट जो हिसाब से अभी एटीएम का बिजनेस ग्रो कर रहा है और एटीएम का cycle, probably they have timed it well, and if they have timed it well, it will work. I mean, with this made in India sort of thing, right? They can ride that wave and they can grow further. Or they are a leader in both the segments. Agreed. So, and with the industry in consolidation mode, that benefits the leader. I think it's a good story to watch out for. Management is very good. Management changes should be carefully watched. अगर कोई management में change होता है क्या, तो यहाँ पे थोड़ा भी single point of success और failure है राजीव कौल के लिए. But I think he's fully committed. I don't think there is a doubt to it. Yeah. Only thing I can add is कि जैसे बहुत सारे stocks हम देखते हैं कि मोनोपोली स्टॉक ढूंढने की कोशिश होती है, जैसे आईआरसीटीसी या कोल इंडिया, ये तो फुल मोनोपोली है. बट ओलिगोपोली में भी मार्केट लीडर ढूंढने की जब कोशिश होती है, जैसे पीडीलाइट इंडस्ट्री ढूंढने की कोशिश होती है एडेसिव में, या नेस्ले या कोई और, तो वी ऑलवेज फाइंड कि उनका वैल्यूएशन बहुत हाई रहता है. करेक्ट. यहाँ पे ऐसा है कि ये मार्केट लीडर है ओलिगोपोली में, बट स्टिल वैल्यूएशन लो है. तो दैट इज व्हाई आई एम मोर हैप्पी कि अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी में हम इन्वेस्ट करें तो अच्छा रहेगा. बाकी आई एग्री विथ ऑल योर पॉइंट्स कि कुछ रिस्क हैं, उनको वॉच आउट करना है, बट मैनेजमेंट अच्छी है, नंबर स्टोरी अच्छी है, मार्केट अच्छा है, हर तरीके से अच्छा है. मेरे पास्ट एक्सपीरियंस से वो जो बोलते हैं ना भाव भगवान से, हाँ, गुजराती से मालूम है ना, मार्केट वाली. हाँ हाँ. If market is not pricing it well, you might be missing something. I mean, the way market is pricing it, there is some truth into it. So, are we missing that truth? कि हमने सब कुछ कवर कर लिया. That's the question to answer. No, so why I am saying कि हम ये एक अच्छी स्टोरी भी हो सकती है, because it's only 1.5 years. मार्केट ने इसको फुल्ली डिस्कवर किया है ये नहीं बोल सकते. एंड द रीजन, सेकंड पॉइंट, जितने ब्लॉक डील्स हुए हैं पिछले 1 महीने में 2 महीने में, वो भी एक इंडिकेशन दे रहा है कि मे बी राइट नाउ मार्केट इज डिस्कवरिंग इट. एक्चुअली उससे ये देखा मोहित कि प्रमोटर का शेयर कम होते जा रहा है, अगर तुमने देखा होगा तो. दे हैव 1 साल पहले, आई मीन 2 साल पहले, 1.5 साल पहले 65.59 था. Now they are on 60. So 5% they have divested. But much of it has went to FII, DII. So small cap में SBI, ICICI है, FII में बाहर के है. So Goldman Sachs, Nomura and all. What's your number for valuation की क्या valuation होना चाहिए, टारगेट प्राइस अगर देना हो, let's say मीडियम टर्म 3 साल? I mean, if you keep the same valuation, same PE ratio, you say 15% annual growth. Yeah. 15% से, I mean, compound करना चाहिए conservatively. हाँ. I think it's that way. जो भी नंबर आएगा, even मैंने एक रफ बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन किए थे. एनालिस्ट लोगों ने तो 420 के आसपास का टारगेट प्राइस दिया है. मैंने बहुत कंजर्वेटिव करके किया, तब भी 380 390 आया. देख, I mean, इसमें
वैल्यूएशन मार्केट असाइन करता है, राइट? तो राइट नाउ आई डोंट नो मार्केट इफ इट इज वरीड अबाउट राइट नाउ CBDC इट इज और 350. कैश. तो मेरा ये मानना है कि 350 तो आज ही है, इवन कंजर्वेटिवली 390 के नीचे नहीं आएगा. दैट इवन आई एम कॉन्फिडेंट. जो एनालिस्ट लोग जिनका मैंने रिपोर्ट्स पढ़े हैं वो 420 के आसपास का टारगेट दे रहे हैं. हाँ, I mean एनालिस्ट तो पता नहीं मोहित. I mean इट इज लाइक एनीवन्स ओपिनियन, उस पे ज्यादा ध्यान देने में मतलब नहीं है. बट assumption सही है, 15% ग्रो करना चाहिए. एंड yes. तो वो उससे मैं भी अग्री कर रहा हूँ. हाँ, और वही थोड़ा स्ट्रैटेजी पे और थोड़ा रिफाइन, आई मीन उनके स्ट्रैटेजी और थोड़ा समझने की जरूरत है कि व्हाट इज दैट दे आर ट्राइंग टू डू मोर, राइट? पंकज खंडेलवाल और एक चीज बोल रहा था कि कैश लॉजिस्टिक्स इज लाइक माय बेस अंडरलाइंग लेयर, आई विल बिल्ड पिलर्स ऑन द टॉप ऑफ इट. तो इंक्लूडिंग रिटेल कैश हाउ इट प्लग्स इन, ATM का, तो दैट्स समथिंग वर्थ वॉचिंग आउट फॉर. आई एग्री. और थोड़ा वही है, मैनेजमेंट चेंज नहीं होना चाहिए. मैनेजमेंट चेंज हुआ तो इट इज अ सिग्निफिकेंट रिस्क. एग्री. बट अभी तो बहुत ही कंफर्टेबल वैल्यूएशन है अदर देन मार्क. आई मीन अभी मार्केट के दिमाग पे कुछ तो नेगेटिव पॉइंट्स ज्यादा है फॉर श्योर. ठीक है. गुड. आई थिंक Yes, I'll ओवरऑल stop the recording. All good? या Okay.